That's great. So first thing, before we start the session, I would like to, I want everybody to pause and think for a second that what you want to achieve in your life. Write any 5 points, right? Any 5 points, what you want to achieve in your life. It can be short term, it can be long term. Short term means within a month or 2 months or 3 months. It can be a long distance, like within a 2 years or 3 years or 5 years, where you see yourself. So this session will be in bilingual. तो आप लोगों को 5 ऐसी चीजें लिखनी है जो कि अपने लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो. And you need to participate, right? Without participation, I won't be able to conduct the further sessions. So I want my audience to be interactive. You can use chat box also, right? Okay, so I hope I'll give 1 more second to you. I hope by that time, it's only five things you have to write, which you think is important for you to achieve in your life and you desire for. So I'll take random names and you need to switch on your camera. This is a condition. You need to switch on your camera and you need to interact with me. Okay, so I want to ask Mohit. Mohit, can you please switch on your camera? And there is no harm. We all know that we are at home. So nobody is going to judge you, what you are wearing, how is your hairstyle. You all are looking fabulous as being a children. You all are fabulous. Please switch on your camera. There is nothing to be behind camera. So Mohit, yeah, Mohit, may I know आपने क्या लिखा है? You can unmute yourself, right? Okay. So Manas, can you tell us what you have written? Ma'am, I have written that firstly, I want to clear my 12th exam with good grades. Then I want to complete my graduation degree. Okay. After that, I want to become a civil servant and serve my country, look after my family, and live a productive and healthy life. Wow, great, great. Very good. I'll come get back to you after taking 2-3 kids more, right? Yes, ma'am. So yes, Saloni, Nishan, Sarvagya, participate. I have heard a lot about you kids कि आप लोग बहुत इंटरेक्टिव हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही ब्रिलियंट क्लास है ये, right? So I want to see how interactive this class is. Priyanka, Menka, Gagan, Sunena, Tanu, yeah, Gauri, if you want to interact, please switch on your camera and tell me what you have written in your goal, means 5 pointers, what you have written which you want to achieve. क्या आप achieve करना चाहते हो? See kids, if you participate, it will be more better for both of us, right? So anyone else want to initiate and participate? आपका कोई भी आपको उसके pointers को judge नहीं कर रहा है, right? It's not about the brilliant kids. It's not about the average kids. We all have few things in our mind, right? हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, लाइफ में desires होती हैं, सबको कुछ ना कुछ achieve करना है लाइफ में. तो वो क्या desires हैं, क्या achieve करना चाहते हैं? 1 more second for this, otherwise I'll continue. It will be good if you interact because it helps you to reach to your goal, very close to that goal which you want to achieve in the coming months or in your later life. Fine. So I'll go with Manas. Okay. Manas, can you again repeat what you have written? First, I want to clear my 12th exam with good grades. Right. So now I would like you to just highlight only 2 out of 5. Clear my 12th exam with good grades and complete my graduation. And after that, I want to become a civil servant. Okay. So now clear your 12th class with a good grades. So by writing, when you have written this,
it is actually something which you have sent this message to your brain, right? अपने brain को आपने ये message भेजा और जब आपने लिखा भी उसको. So goals are something which you are writing and you are telling to yourself that you want to achieve this, right? Yes, अब आपने कभी लिखा कि मुझे 12th में अच्छे grades चाहिए. So this is something which is little bit vague, right? You need to be very specific about it. So if I ask you, need to be very specific, what you're going to do? Ma'am, I want to achieve grades which are above 95%. Great. So now you are very close to your specific goal, right? कि अब 95 achieve करने के लिए या above 95 achieve करने के लिए definitely you know while writing only will not work, right? So how you are going to reach? क्या करना होगा? Ma'am, I have almost completed my syllabus. So right now I am on the revision phase. I'm just revising all the syllabus in all the subjects. And I am also solving the previous year question paper as principal sir advised me. Very good, very good. So your principal has advised perfectly correct that if you solve your previous question paper, so you are getting an idea that how to attempt those papers, right? कितना टाइम होना चाहिए, कितने टाइम में खत्म करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा. सो यू आर वेरी क्लोज टू इट, राइट? सो दीज आर एक्चुअली गोल्स. वी कॉल देम एज गोल्स. सो नाउ गोल्स कैन बी. थैंक यू मानस फॉर बीइंग इंटरैक्टिव. Thank you, ma'am. You can switch on your camera, but yes, thank you for this. I'll proceeding with my session, right? So goal setting, if I say, is something where we have written our desires. We have written, I'm using the word written because we need to be very much specific about it. If we are not writing our goals, it is something, जैसे बंदूक है ना, बिगर गोली के चलाना, या reach to the destination without any where you want to go, you are not aware of, but you are just on the road to go somewhere, right? So it's something like this. So you need to be very clear about your goals and it should be written. So now I want to share my screen. Abhinav, can you tell me my screen is visible? Yeah, it's visible. Yes, it's visible. So I request everyone to please mute yourself. So today's session agenda is we are going to talk about goal setting. We are going to talk about time management, productivity, procrastination, tips for exams preparation, and I'll also tell you the career options, just superficial that what all careers you can go for, right? And later on we'll discuss in each and every topic in detail. So now when I say what is goal setting, the process of writing down the dream and desire, it's just like a map to reach your destination. As I said, if you want to go somewhere, definitely you'll follow the map, right? What all routes you are going to take. So here as Manas, when I asked Manas that how he is going to achieve above 90%, so he said he is doing all these certain things. Like, so being a kid, now if you are preparing for your exams, so your goal setting will be more focused about the goal setting, which are short terms, that is you need to achieve in 2 to 3 months, right? Your exams are in Feb or in March, right? So you need to be very now focused and concentrated that how you can achieve them. तो आपको अपने हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से सोच के चलना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि बस मेरे को 12th में इतने मार्क्स लाना है और हो गया. You need to first write down your goals. आपको उसको प्लान करना है कि अब मैंने अगर मुझे 95 चाहिए या मुझे 80% चाहिए या मुझे 70% चाहिए, तो मुझे वो 70% कैसे मिलेंगे, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा लेट पढ़ना पड़ेगा. ये सारी प्लानिंग्स हमको स्ट्रैटेजी को तैयार करनी पड़ेगी. मुझे कितने पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, मेरी राइटिंग, मुझे कितना राइटिंग वर्क करना पड़ेगा. सो ऑल दिस यू नीड टू राइट. Now, why goal setting? As I said, like whatever you are writing, once you have written something, so you have sent that message to your mind. आपने अपने दिमाग को, ब्रेन को अपना कन्विंस कर दिया, बता दिया, कन्वे कर दिया
कि आपको ये गोल सेट आपने अपने लिए किया है and you want to achieve this and you need to visualize it. Visualize is what? Like you are thinking that you have to achieve this, right? So you're visualizing that you are going to achieve this. And if there is a plan for it, अगर आपके पास पूरा plan है तभी, अगर आपके पास कोई, just imagine करो कि आपको कहीं जाना है, या फिर एक फुटबॉल का हम ग्राउंड लेते हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, वहां पे सारी टीम है जिसका कोई मैनेज नहीं है, उसको नहीं पता कहाँ पे गोल डालना है, कहाँ पे क्या करना है. So will it be able to fulfill their targets or to put the ball into goal? No, they won't be able to, right? Because there is no set direction, there is no particular goal which they have to achieve. ऐसे ही, as a being a child, you need to be very specific. You need to have some direction. That's how you're going to reach to that particular goal. Now, how to define and write goals? So you need to be very, as I said to Manas, right? You need to be very specific. आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा. सिर्फ एक वेग आंसर देना कि मुझे गुड ग्रेड्स चाहिए. अब किसी के लिए गुड ग्रेड्स हो सकते हैं 60%, किसी के लिए गुड ग्रेड्स हो सकते हैं 75%, किसी के लिए 80 और किसी के लिए 99 भी, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू योर पेस. सो आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको अपना लेवल पता है कि मेरा जो लेवल है एवरेज का है, अबव एवरेज का है, मैं 80% आराम से ला सकते हैं, तो हम 85 के लिए टारगेट कर सकते हैं. बट अगर हमको पता है कि हम 95 ला सकते हैं, तो हम 95 के लिए और से अबव के लिए टारगेट करेंगे, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट योर टारगेट यू कैन अचीव, राइट? इट्स नॉट दैट कि 60% वाला भी कभी 90% नहीं ला सकते. यू कैन अचीव, बट यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक इन दिस. आपको अपने को प्रेशर नहीं देना है. वट एवर योर लेवल इज, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक इन दोज मैनर कि आपका जो गोल है वो कैसा होना चाहिए. तो यू नीड टू बी वेरी, यू नीड टू रिमेंबर दिस वर्ड स्मार्ट गोल which says specific. Now when I said specific, उसमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए. जैसे आज मैंने अपने आप से बोला I want to reduce weight, right? So now how much weight? मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि मुझे reduce weight करना है, लेकिन मैं specific नहीं हूँ, right? So if I say that I need to reduce or I need to be in an ideal weight of 48 or 50, then I'm very specific. So now it should be measurable. अब measurable का मतलब क्या हुआ? Anybody will tell me what do you mean by measurable? किसी को पता है? You can unmute yourself and please can interact. Anybody? What do you mean by measurable? You can also use chat box, right? To write, though I'm not able to see the chat right now. Yes, I can see now. Okay, so fine. So if you don't want to be interactive, it's okay, but it will be good for you also if you interact. So measurable is something you have to be very specific, first of all, then measurable by what time you want to achieve this, right? कि जैसे मैंने बोला कि मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना है, आज अपना मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करना है. अब मैंने बोला हिस्ट्री कंप्लीट करना है, हिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो देन आई स्पेसिफिकली से दैट आई विल कंप्लीट फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री by Monday, and I'll give the date. So then it is measurable that within this 2 days or 3 days, I'll be completing these chapters, right? Attainable. अब मैंने अगर बोला कि मैं 2 दिन में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगी, may not be attainable for me, right? और फिर क्या होगा? मैं disheartened हो जाऊंगी, मैं थोड़ा सा demotivated हो जाऊंगी और मुझे लगेगा अरे मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ कुछ ऐसा, right? So it should be attainable. So you need to fix your goals in a manner that can be achievable, attainable, and you are able to complete that. And it should be rewarding and realistic. अगर मैंने उस 2 चैप्टर्स, अगर मेरे हिस्ट्री में अगर 10 चैप्टर्स हैं और मैंने से उसमें से 2 चैप्टर्स 2 दिन के लिए दे दिए, तो that is attainable, right? I can put little bit more efforts and I can complete 2 chapters. And if I am able to complete, I am rewarding myself. Reward कैसे दे सकते हैं? हम अपने आप को पैड कर सकते हैं, हम अपने आप को ग्रेटफुल बोल सकते हैं, हम अपने आप को थैंक यू बोल सकते हैं, हम एक म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर हम जो भी हमें अच्छा लगता है वो उस टाइम के लिए 10 मिनट्स के लिए 20 मिनट्स के लिए कर सकते हैं. लाइक दिस वी कैन रिवॉर्ड आवरसेल्फ एंड इट इज रियलिस्टिक ऑल्सो दैट इट इज अचीवेबल. अगर मैंने सिर्फ ये बोला होता कि नहीं मैं तो 2 दिन में अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगी, तो देन दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक. टाइमली, आई नीड टू बी वेरी टाइम फोकस्ड दैट इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे या 1 वीक के अंदर मुझे अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है.
So I need to be focused on the time also. अगर मैंने सिर्फ history में daily पढ़े जा रही हूँ और मैंने बाकी subjects को specific schedule नहीं करा, then by the end of the day, I'll not be able to complete any of the subjects, right? So it is very important to have a SMART goals. I hope everybody is clear. Anybody wants to ask any question? Will hear? Yeah, please interact, children. Are you there or you have left? Nobody is speaking anything? Yeah, nobody is speaking. That's make only. Wait, are you finding it One interesting and useful or not? Please say yes or no. And your attendance will be marked on the basis of your participation. अगर आप participate करेंगे तो ही मैम आपकी presence मानेगी. Okay? So try to speak. ना आपको अच्छा लग रहा है? Yes, no, कुछ तो जवाब दीजिए. चलिए अपनी शक्लें मत दिखाइए. कुछ तो बोलिए. ऐसा लग रहा है educators की meeting हो रही है. Yeah, so children, please, everybody is saying that interact. So what is making you hesitant in interacting? I don't know whether you're finding this correct, whether you're finding it means is it resonating with you or not. आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमको हमारे उसका है, हमारे समझ का है, या हमें ऐसा करना चाहिए, or you want something else. You can interact, you can always ask कि हम ऐसे specific goals को कैसे design कर सकते हैं if you have already done. अभी तक अगर आपने कर लिया है ऐसा तो. Yes, Manas, you can again interact, or Renu or Sarvagya, Saloni. I'm specifically taking names whom I can see. Fine. So, Mohit, you want to say something? Okay. So fine, I'll move ahead with this now. Okay. So now formulating your goals. So now when you are formulating your goals, what you need to keep it in mind. Like do not have too many goals. जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला था, एक एक्टिविटी जो दी, मैंने बोला कि 5 गोल्स लिखिए और उसमें से अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए कि आपके कौन से 2 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, which you want in 2-3 months, right? So if you have too many goals, then it will not, you'll not be able to complete them, you'll not be able to achieve them, and this ultimately result in means like you will be feeling very demotivated. You feel कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं अटेंड कर पाया, वो भी नहीं अटेंड कर पाया, इस टाइप से. So you need to be very specific with 2 or 3 goals. Think about your passion, your desire, your dream. क्या करना चाहते हो? You always need to ask. हम जैसे 10th में 12th में आते हैं ना, सब लोग हमको बम्बार्ड कर देते हैं क्वेश्चन से, क्या बनना है, क्या लेना है, क्या करोगे. You need to listen to everyone, but you need to listen to your heart, right? What you want to do, क्या passion है आपको, क्या करना अच्छा लगता है, what you really want to do, what you really enjoy, what brings happiness in your life. So उसको अपने आप को ध्यान में रख के you need to plan your goals. Crystallize your thinking. It should be very clear in your mind, very specific. आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को 12th के बाद ये करना है, उसके बाद मैं ऐसे करके ये वाला एग्जाम में अपियर होऊंगा, फिर मैं ये वाले कोर्सेज लूंगा, फिर उसके बाद मैं करियर. So it should be crystallize your thinking, break down your goal into a smaller milestones. अब गोल जैसे रख लिया, जैसे मानस ने हमसे बोला, I'm just taking the Manas example because Manas was the only one who was interacting. So like मानस ने जैसे बोला कि 95% से उसको ज्यादा मार्क्स लाने हैं. So now कैसे वो उस 95% को मतलब अपने आप को अटेन करेगा या उसको उस तक पहुंचेगा, that they need to break, like he needs to break down. Like वो इस पूरे जो अपना शेड्यूल है, अभी कितने, आज कौन सी डेट है और आज की डेट से उसके कितने दिन बचे हैं एग्जाम्स के लिए, right? So calculating. Pardon? May I intervene, ma'am? Michael Pankithyagi, principal of these guys. I'm also right from the very beginning. Okay, welcome, sir. Yeah. Yeah, good evening, ma'am. Obviously, the session is going to be quite interactive, quite interesting as well. But what they are suffering at the right going moment, you see that I am also going to take their counseling session. But we thought that you would be able to guide them in a somewhat more better way. Fact of the matter is that some of the students are having some attention deficit disorder. You see that this is only 1 month is to go by for to take up their exams. Exams are also to take
from 28th of Feb. So what I want to make you feel at this point of time that there are two ways of studying. One is wide extensive study, whereas another one is selective intensive study. So as Manas talked about that, he's all prepared and is going for the revisional courses, but some of the students are not well prepared and they are having the examination stress, examination phobia. So you need to give them certain tips that how could they be able to restore if you that. can wait till the end, definitely we'll be covering all that. Everything is covered, sir. Everything is covered. Yes. Yeah. We'll try to. Yeah, sure. Try to, Just wait till the end because we are starting with the goals because it is very important. Until and unless child is aware about what need to be the goal and what are the goals and what need. Yeah, that's right, ma'am. I'm going to say without an extra reserve, but simply I'm inclined to get in touch with you with this much of thing that there are certain psychological disorders which the students are facing. And they need to get their grievances redressed by you at this point of time, that those who are averagingly prepared, how could they be able to restore their knowledge, their preparation for the exam so that their examination fear get reduced. Yeah, sure, sir. We'll be covering that, right? Thank you. Thank you. Yeah. So when Thank you, ma'am. Please carry on. Yeah. So when I'm saying formulating your goals, so as I mentioned that breakdown. So as Manas was saying that या मैंने अगर अपना कोई गोल ले लिया तो मैं सीधे आई कैन नॉट लीप टू दैट. अगर मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं एक जंप मार के उस कॉलेज में नहीं पहुंच जाऊंगी. आई नीड टू प्लान माय रोड मैप. मुझे कि उसमें ऐसा लाना है, इस सब्जेक्ट में मुझे इतने मार्क्स चाहिए और उसके लिए बाद में मुझे कैसे पढ़ाई करना है, मुझे कैसे उस पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मेरा अगर 1 मंथ बचा हुआ है तो मैं कैसे उस सिलेबस को कंप्लीट करूंगी. नाउ एज सर मेंशन कि हम कई बच्चे होते हैं कि जिनका अभी तक सिलेबस हो सकता है स्टार्ट भी नहीं हुआ हो और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका सिलेबस कंप्लीट होके पड़ा हुआ, राइट. सो वी डू नॉट हैव टू कंपेयर आवरसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल सबका अपना एक पेस है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन पेस एंड यू डू नॉट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. So आपको अभी भी अगर if you have not started yet, if you are not serious about yet, so what you have to do is कि आप अभी भी पूरे डेज को कैलकुलेट करिए कि कितने डेज मेरे पास बच्चे हैं, उनको डिवाइड करिए अपने सब्जेक्ट्स जितने हैं आपके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हम बच्चा अक्सर क्या करते हैं कि जो टफ सब्जेक्ट होता है उसको सबसे लास्ट में रख देते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा और या फिर ये टफ है और इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा. डोंट डू दिस मिस्टेक. प्लीज ट्राई टू कंप्लीट योर टफेस्ट subject prior and then the lighter one you can even understand when you are not even in a mood, that much mood to study. But आप जब बहुत focused हो, concentrated हो, तब आपको हमेशा अपना tough जो subject आपको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा tough है वो करना चाहिए and you need to complete that so that by that time you reach nearby the exams, you will be able to again revise it and again revise it, right? So don't this mistake. It happens with the kids like वो वही subject पढ़े जाते हैं जो उनको easy होता है. Now write your action plan. So this will be your action plan actually, like how you are going to execute. Like आपने plan बना लिया, आपने timetable बना लिया, अपना schedule बना लिया, everything you have made, but you are not executing. You are not. आपने बोला कि सुबह से मैं 8 बजे से उठूंगा, ठीक है. अब अनरियलिस्टिक क्या हो गया कि मैंने 8 बजे से उठूंगा उसके बाद मैं 2 घंटा पढ़ूंगा. अगर मैंने बोला कि मैं 4 बजे से उठ के पढ़ूंगा या मैं पूरी रात पढ़ूंगा, it will be again unrealistic. So you need to plan your action plan in a way that you can achieve them. So your action plan once it's been made, तब आपको उसको एग्जीक्यूट करना भी पड़ेगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने टाइम टेबल बना लिया, मैंने अपने गोल्स लिख लिए और हो गया. You need to work on that. Now prioritizing goals wisely. So why it becomes prioritizing? Because you need to understand priority. अगर आपके लिए क्या है, अगर घर में शादी है और एग्जाम्स हैं, तो what will be your priority? Definitely your board exams, right? So you need to understand what is your priority. So priority brings the efficiency to the work. अगर आपने priority पे अपना tough subject को रखा है, तो आपको मालूम है मेरे पास इतने ही दिन बचे हैं और मुझे अगर मैंने इन दिनों में या 5 दिन में या 6 दिन में ये कंप्लीट नहीं किया तो then I'll be losing these 6 days again and then I'll be left with again very few number of days which will be I'll not be able to complete my entire subjects, right? So prioritizing goals could based on the deadlines. आपको अपने आप को deadline देनी है. Now you're very near, right? Only hardly 1 month is left, so you're very near. So you need to प्रायोरिटाइज योर थिंग. आपको अपनी डेडलाइंस रखनी है कि इस सिलेबस, इस सब्जेक्ट को मुझे इस तारीख तक खत्म करना है, इस सब्जेक्ट को मुझे इस तारीख तक खत्म करना है. ये सारा आपको प्लान करना पड़ेगा. And prioritizing your most crucial work, as I mentioned, is very important because it helps you
to complete your entire things or whatever, because you cannot eliminate any of the subject, right? In the 12th board you cannot कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको नहीं पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकते, हमको सारे एग्जाम्स देने हैं, right? So उसमें प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है. Now what you need to do, so you need to develop and you need to explore. आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसमें क्या आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं, व्हाट रिसोर्स पीपल यू नीड टू कनेक्ट विद, क्या उसमें अपने हिसाब से आप आंसर्स लिख सकते हो, क्या क्रिएटिविटी आउट ऑफ बॉक्स यू कैन राइट योर आंसर्स, क्या टेक्नोलॉजी को यूज करना, मीन्स लाइक सपोज फॉर एन एग्जांपल यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, नाउ यू थिंक कि अगर मैं इसका वीडियो और देख लूं तो मुझे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, या मैं इसको और अच्छे से इसको रिसर्च मार लूं इसका तो मुझे और क्लियर हो जाएगा. सो यू नीड टू यूज एवरीथिंग right now, you need to explore about that subject. तो अभी आपके पास बहुत स्पेसिफिक टाइम बचा है ना, तो डोंट वेस्ट योर टाइम. अभी जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको ही पढ़ने की कोशिश करो, उसको ही रिसर्च करने की कोशिश करो, उसी से ही रिलेटेड इफ यू वांट टू सी द वीडियोस यू कैन गो फॉर इट. चैलेंज योरसेल्फ. ऐसा नहीं है कि मेरा तो बस यही है कि मैं सुबह 10 बजे ही सो के उठ सकती हूँ और मुझे तो 10 बजे रात में नींद आ जाती है, और या फिर मैं इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती. तो चैलेंज योरसेल्फ, टेक सम चैलेंज, बिकॉज दिस 12th बोर्ड इज द बोर्ड टाइम वेयर एंटायर लाइफ means like your entire life career is dependent on this, right? 12th के बाद you are able to get the good admissions in the good colleges. आपका अगर परसेंटेज नहीं आता है तो आपको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको जस्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि इस कॉलेज में चले जाते हैं. सो यू चैलेंज योरसेल्फ, टेक सम बूस्ट योरसेल्फ कि हमने अपने बियॉन्ड, आपकी जो लिमिट है थोड़ा सा बियॉन्ड उससे जा सकते हैं, because it is your life, right? It is your life, nobody else is going to suffer, you are the only one. Do the SWOT analysis. What are your strength? क्या strength है? आपने अगर अपनी strength, अपनी weaknesses के बारे में जान लिया, so then आपके क्या threats हैं, आपके क्या fears हैं, if you have already analyzed that, so then you will be able to do that. And write discipline and habits. Now all this come with the, when you are able to manage your time, right? So we are going to cover that how you are going to achieve all these goals within that time. So we all know, like we have 24 hours. सबके पास वही टाइम है, सबको उतना ही टाइम मिला हुआ, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो. Everybody is having 24 hours in a day, right? उस 24 hours को कैसे यूटिलाइज करना है, हम देखते हैं ना कई लोग 24 hours में बहुत सारा काम कर लेते हैं, एंड देन ऑल्सो दे आर फ्री, वो अपना पढ़ भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, सब कर लेते हैं. बट फ्यू आर देयर कीप ऑन स्ट्रगलिंग. उनको स्ट्रगल बना रहता है कि ये नहीं काम हुआ, ये पेंडिंग हो गया, वो पेंडिंग, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि उनके पास टाइम कम था और किसी के पास टाइम ज्यादा था. फ्यू आर एबल टू मैनेज दैट टाइम, फ्यू आर नॉट एबल टू मैनेज. सो दिस इज द थिंग, लाइक वी नीड टू लर्न दैट हाउ टू मैनेज आवर टाइम. सो टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी मैनेज आवर टाइम by spending our time on the certain activities. So that is actually the time management. Now what happens अगर आप time management, again I'll just want to interact, क्या होगा अगर आप time manage नहीं कर पाओगे? Anybody wants to interact for this? किसी को interact करना है इसमें? From today, how can I manage time? This Mayur is asking. So Mayur, by the end of this session, you will be understanding that how you can manage time, right? You have to stay with us. Okay, Mayur, आप ही मुझे बताओ, if you are chatting with me, so then tell me कि अगर time manage नहीं कर पाते हो तो क्या क्या होगा? क्या problems face कर सकते हो आप? Ma'am, your kids are not interacting at all. So it actually, I'm not able to understand whether they are getting the point, whatever. Yeah, they might be getting, but I don't know why they are not responsive. भाई आप लोग बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करें फिर. What is the use of all this? आपको यदि अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमारे लिए तो हो नहीं रहा है, ये आप लोगों के लिए हो रहा है. आपको नहीं यदि कंटिन्यू रखना तो आई थिंक मैम को भी क्यों ट्रबल दे रहे हैं हम. Just
थोड़ा बहुत हम इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। कुछ तो बोलिए आप, यस नो कुछ आप तो मत माइक यूज करिए, वो अपना कैमरा यूज करिए, बट एटलीस्ट स्पीक, राइट? तनु इज राइटिंग समथिंग, बट ठीक है, आप बोलिए भी थोड़ा सा हिंदी में बोलिए, कोई आप हाँ, हिंदी घबराइए में मत, बोलिए बेटा, मैं भी तो हिंदी में बोल रही हूँ ना आप लोग से बीच बीच में, जरूरी नहीं है आपको आराम इंग्लिश से में ही बोलिए, बोलना है। अपना ऑन करिए वीडियो भी और ये भी ऑडियो, और बोलिए आप, क्या प्रॉब्लम है? ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा ना ऐसे। कंटिन्यू करिए मैम, वी आर एंजॉइंग। नहीं, इट इज नथिंग टू एंजॉय, यहाँ एंजॉयमेंट तो नहीं हो रहा है। We are not enjoying, we are very specific about what, how you people, and we are, actually 3 of us are here to tell you. Manas is active here. Ma'am, should I answer this question? Yeah, sure, why not? यस मैम, अगर मैम टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जो क्रूशियल चैप्टर्स हैं वो एन एग्जाम के वक्त तक पूरा नहीं हो पाएंगे, और एंजाइटी अटैक्स आएंगे, और जो है हड़बड़ी सी रहेगी मन में कि ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो जो चीज आती है वो चीज भी हम लोग जो है वो गलत करने के चांस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे उसकी वजह से। बिल्कुल सही बोला मानस आपने, बिल्कुल हार्दिक है, हार्दिक कुछ बोलना चाहते हैं? बोलो बेटा। यस हार्दिक, आप बेटा बिल्कुल, आप लोग हिंदी में मुझसे कन्वर्स कर सकते हो, आप चाहते हो मैं हिंदी में और ज्यादा पूरा सेशन लूं, दैट आई ऑल्सो आई कैन डू, योर एंटायर सेशन कैन बी इन हिंदी, नॉट एन इश्यू। ओके, सो जैसे कि मानस ने बोला कि अगर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो एक एंजाइटी आ जाती है। लाइक एंजाइटी क्या होती है कि हम, कई बार ऐसा होता है ना, एग्जाम्स आए तो और एकदम सारा जो याद तो किया था, पढ़ा तो था, बट जैसे पेपर देखा वो सब ब्लैंक हो गया, राइट? सो दैट इज एक्चुअली द सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी, कि आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा आपने क्या पढ़ा पूरी रात। कई बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम के एक दिन पहले पूरी रात जग के पढ़ाई करते हैं, और फिर कॉमन प्रॉब्लम होती है, काफी बच्चों की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। उनको ऐसा लगता है कि आज अगर मैंने रात में पढ़ लिया तो सब कुछ सही हो जाएगा, बट एक्चुअली दे आर हार्मिंग देमसेल्व्स, और एक रात में पढ़ के वो अपना पूरा माइंड को ब्लॉट कर देते हैं। उसके बाद जब एग्जाम का जब अपियर होने जाते हैं तो उनको इतनी घबराहट, इतनी एंजाइटी होती है कि जो उन्होंने पढ़ा होता है वो भी वो भूल जाते हैं। सो दैट एक्चुअली हैपेंस। सो व्हाट ऑल यू नीड टू डू टू मैनेज योर टाइम्स, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। So here, so क्या हो जाता है अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो डिफिकल्टी हो जाती है असेसमेंट देने में, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी हो जाती है आपको, आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और अल्टीमेटली आप बहुत टायर्ड फील करने लग जाते हैं। इसी जगह पे अगर हमारा अच्छे से हम टाइम मैनेज कर सकते हैं तो हमारी इफिशियंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नाउ प्रोडक्टिविटी वी अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या होती है प्रोडक्टिविटी, राइट? तो इट हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज आवर टास्क। अगर हम मैनेज अच्छे से अपने टाइम को कर लेते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। और ये कब से मैनेज करना, ये नहीं कि एग्जाम के 5 दिन पहले से या एक दिन पहले से हम बोले कि नहीं मैंने तो आज पूरा सब्जेक्ट रात भर बैठ के पढ़ना है, जैसे अभी मैंने बोला, तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। टाइम मैनेजमेंट हुआ कि आपने आज से, जैसे आज आपका सेशन हो रहा है, आप अगर अवेयर नहीं थे अभी तक और आज आपका सेशन हो रहा है, तो आज से अगर आपने अपना टाइम शेड्यूल कर लिया एंड यू विल बी एबल टू कवर एंटायर सिलेबस, अपना सारा सिलेबस आप कवर कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज अगेन यू आर हैविंग टाइम, मींस ऐसा नहीं है टाइम चला गया है, अभी भी एक महीना बचा है, 1-1.25 महीना बचा है, जहाँ पे आप अभी भी अपने शेड्यूल को तैयार कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग योर टाइम। सो नाउ व्हाट यू नीड टू एलिमिनेट, अगर हम टाइम मैनेज की बात करते हैं तो हमें क्या चीज से दूर करना पड़ेगा अपने आप को, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर होना पड़ेगा। जैसे कि मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ, मुझे तो रात में जल्दी नींद आ जाती है, या फिर मुझको रात में लेट नींद आती है, मुझे रात में देर तक पढ़ने की आदत है। अपना एक कंफर्ट जोन हो गया, नहीं मैं तो बेड पे बैठ के पढ़ता हूँ, मैं तो ऐसे ही करके पढ़ता हूँ, तो एक कंफर्ट जोन हो गया ये, राइट? यू नीड टू बी आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज समथिंग, आपको लग रहा है बहुत टाइम है, अभी तो एक महीना है, कर लेंगे, पढ़ाई हो जाएगी, क्या है, एग्जाम ही तो है, कर लेंगे। So that is you thinking that you have enough time to do that and you are just delaying your things. Barriers and obstacles, आपके कुछ ना कुछ, कभी फोन पे डिस्ट्रैक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, कहीं पार्टी हो गई, तो ये सारे छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स जो आपके उसमें आड़े आते रहते हैं। वीकनेसेस एंड थ्रेट्स, आपको लगता है कि नहीं मैं तो ये सब्जेक्ट में अच्छा हूँ ही नहीं, मैथ्स तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा,
या फिर मैं तो फिजिक्स मुझे आती ही नहीं है, या फिर मुझे तो बेकार लगता है ये बायो, मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। सो ऑल दीज आर द वीकनेसेस एंड थ्रेड्स कि आपको और उस चक्कर में आप पढ़ते ही नहीं हो। फिर डिस्ट्रैक्शन एंड टाइम वेस्टर, दिस इज समथिंग आपके उसमें मतलब आप पढ़ने बैठे हो, नोटिफिकेशन हुआ तो फटाफट मोबाइल चेक करने लगे, मोबाइल चेक करते करते आपको 1 घंटा निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। योर माइंड सेट एंड योर लिमिटेड बिलीव्स, आपका माइंड सेट ऐसा है, अरे मैं तो यार वो जो मानस है ना वो ही ला सकता है 95%, अपना तो बस का ही नहीं है, राइट। तो ये माइंड सेट हो गया, अरे वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम तो ऐसे ही हैं, वीक बच्चे हैं। सो ऑल दीज आर द माइंड सेट्स, ओके, लिमिटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ कि मैं तो साइंस में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो हिस्ट्री में अच्छा नहीं हूँ, या तो मैं तो इसमें अच्छा नहीं हूँ, या मैं तो लिख नहीं पाता हूँ, या फिर मुझे मैं एग्जाम में बहुत फास्ट नहीं लिख पाता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ। तो ऑल दीज आर द लिमिटेड बिलीव्स which is actually restricting you to achieve your goals. तो आप क्या कर सकते हो, like you need to break down goals into achievable tasks, ठीक है। So these are the solutions which I am telling you. आपको अपने goals को छोटे छोटे उसमें जो कि आप अचीवेबल हो, स्टेपिंग स्टोन्स के फॉर्म में उसको छोटे छोटे भागों में बांटना है कि आज 5 दिन में मुझे ये कर लेना है, 5 दिन बाद मैं इसके करूंगा, और जब तक मेरे एग्जाम्स आएंगे जब तक मेरा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो 5 दिन को भी और छोटे फॉर्म में, जैसे मैंने अगर आज साइंस फिजिक्स पढ़ रहा हूं मैं, तो फिजिक्स को मैंने 5 दिन में डिवाइड किया, तो फिजिक्स का आज मैं 2 चैप्टर्स ये करूंगा, फिर मैं उसको लिख के देखूंगा, फिर मैं उसको 2 और चैप्टर्स करूंगा, तो 5 दिन में मैं कैसे फिजिक्स को कंप्लीट करूंगा, दैट यू आर प्रायोरिटाइजिंग एंड दैट यू आर ब्रेकिंग। Now create a timeline for each task and stick to it. अब ऐसा नहीं कि मुझे फिजिक्स टफ लगता है तो मैंने पूरे 1 महीने फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ लिया, या मुझे एक इजी लगता है सब्जेक्ट मैंने पूरे 1 महीने वही पढ़ते गया हूँ। तो यू नीड टू क्रिएट योर टाइमलाइन। अगर आपने अपना टाइम टेबल बनाया है तो हर एक का स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए कि इस तारीख तक मैं ये कंप्लीट करूंगा, इस तारीख तक मैं ये कंप्लीट करूंगा, शाम को मैं ये पढ़ूंगा। इवन योर माइन्यूट द एंटायर डे टू बी शेड्यूल्ड कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप होऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा, 2 घंटे कंटिन्यूएशन में पढ़ूंगा, उसके या 45 मिनट्स में कंटिन्यूएशन में पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। ऑल दीज नीड टू बी मेंशन्ड एंड शेड्यूल्ड, ओके, सो दैट योर माइंड वर्क्स अकॉर्डिंगली। से नो, लर्न टू से नो। नाउ बहुत से बच्चे जो होते हैं नो नहीं बोल पाते अपने फ्रेंड्स को, राइट, यू आर नॉट एबल टू से नो। तो आई नीड टू टेल यू कि आपको ये बोलना जरूर, जस्ट अ मिनट, you need to understand that there is no harm in telling no. You need to be very polite in saying no. अगर आपका कोई फ्रेंड आता है आपको बोलता है कि अरे चलो, अरे बहुत पढ़ा बन रहा है, अरे बहुत पढ़ाई कर रहा है, चलो अभी आज घूम कर आते हैं, tell very humbly in a very polite manner, I have to study. या फिर आपको घर में अगर कोई काम है तो टेल योर पेरेंट्स कि लाइक दिस टाइम इज माय स्टडीइंग टाइम, सो डू नॉट डिस्टर्ब मी फॉर दीज आवर्स, राइट। आपको बहुत स्पेसिफिकली अपने पूरे घर के मेंबर्स को बताना पड़ेगा, अपना एक कॉर्नर बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप सबको पता हो कि ये आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, और अगर आप वहाँ पे बैठे हो तो इसका मतलब आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो दे शुड नॉट डिस्टर्ब यू। और उस टाइम पे आपका चाहे कोई भी reason ho, you'll not be distracting, and say in a very humble way, say no, start learning this saying no. It will help you to stick to your goals. Now do a time audit. Now what is time audit? So time audit, जैसे कि आज पूरा दिन मैंने बिताया तो मैं रात में उसको evaluate करूंगी कि how much, where I have invested my time, where I have spent my क्या मैंने जो आज पूरा टू डू लिस्ट बनाई थी वो मैंने क्या पूरा कर लिया, क्या मैंने ये सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, अगर नहीं करे तो क्यों नहीं कर पाया मैं, व्हाट वाज द रीजन, क्या मेरे टाइम वेस्टर्स ज्यादा थे, या मैं डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हुआ था, मैंने सोशल मीडिया पे ज्यादा अटैच किया था, या मैंने एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम तक पढ़ लिया जो मैंने टारगेट किया था। ओके, सो ऑल दिस हेल्प्स यू टू रिमेन स्टिक टू योर वट एवर यू हैव planned yourself, that आप उस पे पूरा अटैच रहोगे या उस पे कनेक्टेड रहोगे कि आपने आज क्या प्लान किया था अपने आप के शेड्यूल के लिए। Now create a to-do list. As I mentioned, to-do list क्या होती है, what you need to mention, आपको ये ध्यान रखना है जब आप to-do list बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए प्रायोरिटीज क्या है, आपको क्या करना है। लाइक आज पूरे दिन का इंटेंट जिसको बोलते हैं ना, इंटेंशंस लिखना है कि मेरे को ये सारी करनी है। लाइक यू हैव रिटन 12 to-do list, आउट ऑफ दैट यू हैव टू मेक अ प्रायोरिटी ऑफ 5 or 6. नाउ बाय द एंड ऑफ द डे अगर आपने
12 बनाया और आपने इसमें से 6 भी अचीव कर लिया, दैट इज गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड, दैट अगेन इट विल बी अ मींस आपको अपने आप को रिवॉर्ड उस टाइम पे देना चाहिए कि एटलीस्ट मैंने 6 कर लिया, जहां पे मैं 1 या 2 ही कर पाता था, आज मैंने 6 कर लिया। एंड देन वॉट एवर इज लेफ्ट, और वो प्रायोरिटी है तो आपको उसको नेक्स्ट डे पे अपने टू डू लिस्ट में ऐड कर लेना है। सो लाइक दिस यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर इंपॉर्टेंट टास्क, राइट। तो अब जब आप अपना टू डू लिस्ट बना रहे हो या अपने डेट शेड्यूल को प्लान कर रहे हो, a few things you need to keep in mind, that important things that must be done right now. आपको हमेशा वो लिखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट की, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट पेपर अगर फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है, सो द इम्पॉर्टेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा कि मुझे सबसे पहले उसको करना है, ठीक है, उसको स्टार्ट करना है, उसको बिगिन करना है, चाहे वो मेरे लिए कितना भी टफ हो। इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन बी डेलीगेटेड टू अदर पीपल। नाउ अगर मैं पढ़ने बैठे हूँ, फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो मैंने ये फोन जो है और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे घर में कोई नहीं है या छोटा भाई बहन है, तो मैंने वो वर्क को डेलीगेट कर दिया कि ठीक है, अगर कोई कॉल आता है तो मेरे बिहाफ में तुमको अटेंड कर लेना है, या कोई बेल रिंग होती है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो आई विल नॉट बी ओपनिंग द डोर, यू विल गो एंड ओपन। मैं अगर कोई खाना, अगर कोई मे बी लाइक किसी को अपना खुद का खाना वाना बनाना पड़ता है, तो टाइप प्रायोरिटाइज दैट थिंग कि मैं आज ये इसको इस टाइप से मैनेज कर लूंगा कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कैन बी डेलीगेट, यू आस्क समबडी एल्स कि वो आपके लिए है तो इम्पोर्टेंट, खाना खाना इम्पोर्टेंट है, राइट, यू कैन नॉट से कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, but you can ask somebody to cook for you, or you can ask somebody to set a dining table for you. So all these can be delegated. Important thing that can be done later because you still have time. Like अभी ये पूरा एग्जाम का टाइम टेबल आ गया होगा, तो अगर आपका जो लास्ट पेपर है ना, उसके लिए, और आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू इन द रेलेवेंस टू द पेपर राइट नाउ बिकॉज यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो आपके लिए सबसे पहला पेपर क्या हो गया, वो इंपॉर्टेंट हो गया, उसको अभी से इंपॉर्टेंट हो गया, और जो सबसे लास्ट पेपर है उसके लिए थोड़ा सा भी टाइम है, तो आप यू कैन मेक इट लिटिल व्हेन यू आर मेकिंग योर टाइम टेबल, वो थोड़ा सा लास्ट में हो सकता है। थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, फोन, योर सोशल मीडिया, your notification, close them, everything, because they are not at all important right now. Your marriages party or your partying with your friends, these are not important for, so just avoid them, just say no to that, okay, and start with the first one. Now don't multitask. Again, there is one activity for you all, and I want everybody to understand this and do an activity. I hope everybody is again having pen and paper, and I want everybody to participate in this activity because it will tell you that what actually you will understand what it is. So what you have to do is write number 21 to 20, right? Number 1 to 20, and just calculate the time, how much time you are taking to write 1 to 20. You have to judge your own time, right? So just write 1 to 20 and calculate your time. So again, I'm repeating those who are still joining. So what you have to do is you have to write 1 to 20 and you have to calculate your own time. And write in a horizontal way, 1 to 20, or in a vertical way, any way you are writing, but write 1 to 20. Written, just give me thumbs up or a hand raise so that I can understand, yes, you are writing and you are doing this activity. Okay, fine. So now the second condition is like you have to, again, you have to write 1 to 20, but now this time you have to write ABC along with 1. Then the like ABCD लिखना है 1 के साथ में, ABCD, EFG लिखना है 2 के साथ में, like this you have to do. या फिर आप एक एक अल्फाबेट लिखते जाओ, जैसे 1 के साथ में A लिखना है, 2 के साथ में B लिखना है, C के साथ 3 के साथ में C लिखना है, ऐसा लिखना है. And again, if you have done, so please raise your hand or just give me thumbs up. And then again, calculate the time, right? How much time? Done? Yes, ma'am.
Have you done? Please show me thumbs up or hand raise so that, okay, Tanu is showing thumbs up. Fine. Fine. So again, Manas, have you done? Yeah. Okay. So now again, please keep calculating your time and keep mentioning each activity, right? Now the third is that what you have to do is you have written 1, then you have written A. So write A for apple or whatever alphabet, one like your alphabet to be there. With alphabet, some name to be there. It can be any. And calculate your time. Once you do, please show me again thumbs up or interact. So this time I want Tanu to please interact. And Super Manik. Okay, Super Manik, can you interact with me? बात कर सकते हो आप मुझसे? ठीक है, कौन बात कर सकता है? किसने ये एक्टिविटी कर ली तीनों? Ma'am, can you please repeat the third activity? Okay, so third activity is you have already written 1 and then in front of 1 you have written one alphabet, that is A. So now with alphabet you have to write the name and you have to calculate again time, and please be honest till 20, okay, if you have completed. Okay, so Renu, can you interact with me, beta? Yes, ma'am. Yeah, so Renu, आपको कितना टाइम लगा फर्स्ट 1 से लेके 20 तक लिखने में? 15 seconds. Okay, उसके बाद आपने जब अल्फाबेट के साथ लिखा तब कितना टाइम लगा? 1 minute. 1 minute. फिर आपने अल्फाबेट का जब आपने नेम तक लिखा उसके साथ में कितना टाइम लगा? 2 minutes, 3 seconds. Okay. Anybody else? I'll get back to you on this, right? Anybody else? कोई और बात करना चाहेगा इस बारे में, एक्टिविटी के बारे में? तो क्या 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 इसमें? तो जैसे रेनू ने हमको बताया कि उसको पहले 6 सेकेंड्स लगे, फिर उसको 1 मिनट कुछ सेकेंड्स लगे, फिर उसको 2 मिनट कुछ सेकेंड्स लगे, राइट? सो इट इज क्यों? क्योंकि वो एक साथ 3 काम कर रही थी तो उसको टाइम ज्यादा लगा, राइट? पहला एक जो काम पे वो फोकस थी उसने फटाफट वो कंप्लीट कर लिया. So this is actually multitasking, and this multitasking is not good over here. Okay, nowadays children are more into multitasking. वो सोचते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे. Actually, it is hampering your mind, and actually it is time taken, time consuming. आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक साथ इतने सारे काम कर लिए, ये भी कर लिया, वो ये कर लिया, लेकिन हम साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम एक बार में जो काम एक फोकस होके करते हैं वो हम फास्ट करते हैं, प्लस वो हमको ज्यादा लंबे टाइम तक वो कॉन्सेंट्रेट होके करते हैं और स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से हम उसको फाइनली कर पाते हैं. बट इफ वी आर एंगेज्ड इन फ्यू वर्क साइमल्टेनियसली, हम उसको उतना, हमको ऐसा लगता है कि हमने 3 काम एक साथ कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको उतना ही टाइम लगा, राइट? उससे ज्यादा टाइम लगा आपको तीनों एक्टिविटी करने में. मतलब एक एक्टिविटी को करने में आपको जितना टाइम लगता था उतना लगा, दूसरी एक्टिविटी को करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, यानी कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा वो तीनों एक्टिविटी या चारों एक्टिविटी करने में. ये यहाँ पे मल्टीटास्किंग, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, क्लास अटेंड कर रहे हैं, साथ में वो अपना कोई वीडियो देखने लग गए हैं, फिर वो पता चला ये भी करने लग गए हैं, मैसेज भी टाइप करने लग गए हैं, अपने फ्रेंड को हाय हेलो भी भेजने लग गए हैं, कुछ और भी देखने लगे हैं. So this multitasking is actually hampering their knowledge. So actually the study shows that multitasking negatively affects short-term memory. Switching between challenging tasks literally drain your brain, and it also makes you more likely to commit mistakes. तो आप specifically होके
वो फोकस होके वो काम जो आप एक एक्टिविटी को करोगे उसमें आप टाइम भी ज्यादा लगाओगे और उसको फाइनली भी नहीं कर पाओगे. सो दैट इज व्हाई इट्स आस्क्ड नॉट टू मल्टीटास्क. मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन. व्हाट यू हैव टू डू नाउ, लाइक अगर आपके घर में कुछ या कुछ भी आपका अगर मोबाइल है तो उसको साइलेंट पे डाल दो, उसको नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो. Keep your device shut somewhere. Don't ask your parents to take from you. और या फिर उसको कहीं ऐसी जगह पे डाल दो जहाँ पे आपको अप्रोचेबल नहीं हो. जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो वहीं पे आपका मोबाइल रखा है तो 5 मिनट लगता है, कोई नोटिफिकेशन विंग किया है तो आप फटाफट उसको देखने लग जाते हो. फिर आपने सोचा कि नहीं मैं 5 बस देखूंगा कि कितना क्या किसका मैसेजेस आया, पता चला उसमें आधा घंटा चला गया. ठीक है, फिर आप सोचोगे चलो एक वीडियो वॉच कर लेता हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन आपने ब्रेक तो सोचा था 5 मिनट्स का, लेकिन आपका आधा घंटा कहाँ चला गया आपको पता ही नहीं चला. So all these are the time wasters which you need to set away from yourself. You need to tell your family members कि अब मेरे एग्जाम टाइम है, अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो मुझे प्लीज पॉइंट आउट करो, या फिर मुझसे ये मोबाइल इस टाइम के लिए ले लो, ये मेरे पढ़ने का टाइम है. So you need to understand these because you need to understand that what is more important now. So again, we'll be emphasizing on the strategies to be organized. आप कैसे organize कर सकते हो? तो make to-do list. I'm just recapitalizing it. Prioritize your to-do list. आपके लिए क्या priority है वो आपको to-do list को mention करना है. Set yourself time-bound goals. कि किस time तक कौन सा goal achieve करना है. Become master of scheduling and project planning. Scheduling means आपको अपना पूरा day का schedule करना है, फिर पूरे day के हिसाब से आपको पूरा month को schedule करना है. Tackle the hardest time at your peak time. Please do not leave your hard subjects till the last. Okay, please make it a priority to complete them. Use task and time management apps. So there are some time management apps which you can also follow. Okay, but in spite of that, you can always stick to the watch. Like if you are writing, if you are doing something, take a TikTok watch, not on a mobile, because again, there will be the chances that you can engage in any other activities. Now, what you need to, as Sir was telling, right? The people are struggling or children are struggling. So what is actually missing? Because they are not into routine. Their routine is totally disturbed. रात में देर तक पढ़ रहे हैं, सुबह का कोई टाइम नहीं है उठने का. उनको लग रहा है कि रात में उन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली है और सुबह जो उनका पीक टाइम था, मे भी हो सकता है प्राइम टाइम हो उनका, और वो उस टाइम को मिस कर देते हैं. वो कहीं 10 बजे उठेंगे, जब तक उनका आधा दिन निकल जाएगा. फिर घर में सब लोग उठ जाएंगे उस टाइम पे, और सब फिर नेचुरल है क्योंकि घर में है सब लोग, तो सब आपस में बात करेंगे, किसी का कोई वर्क हो रहा है, ये हो रहा है, तो यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट दैट टाइम पीरियड, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू सेट योर रूटीन इन अ वे वेयर यू आर डिस्टर्ब्ड इन अ मिनिमम वे. So what to do to get started? Figure out when you are most productive. ये बहुत जरूरी है. अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? हम सबके पास ऐसा रहता है कि हम सब लोग, हमारा कुछ ना कुछ एक प्राइम टाइम होता है. प्राइम टाइम इन द सेंस कि कोई लोग का जो प्राइम टाइम होता है वो मॉर्निंग में 4 बजे से होता है. किसी का कोई बहुत फोकस्ड होके दिन में पढ़ सकता है, कोई बहुत फोकस्ड होके रात में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकता है. तो एवरीबडी इज हैविंग देयर प्राइम टाइम. सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंडेड कि आपका प्राइम टाइम कब है, आप कब ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, आप कब बहुत ज्यादा अच्छा फोकस्ड होके पढ़ लेते हो. कि घर में जब कोई नहीं है तब आप अच्छे से पढ़ लेते हो, सुबह जब सब लोग ऑफिस चले जाते हैं या घर में सब दोपहर में जब सब सो जाते हैं. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, लाइक what part of the day you are most energized and schedule activity. Energized also कि आपको कब ऐसा लग रहा है दिन में पढ़ने तो बैठ गए हो, पता चला नींद आए जा रही है और आप फोकस्ड भी नहीं हो, तो आपने उस टाइम पे आपने वेस्ट कर दिया. आप किताब खोल के बैठे हुए बट यू नो दैट आप फोकस नहीं हो पा रहे हो. So benefits of setting routine. So you need to set your routine. उसके क्या क्या benefits होते हैं? Bring sense of calm. जब आप कोई एक रूटीन में अपने आप को आ जाते हो ना, तो आपको एक कामनेस आती है. आपको पता होता है कि हाँ मुझे ये काम इस टाइम पे करना है, मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करना है, फिर मुझे थोड़ा 5 मिनट मेडिटेट करना है, नहीं भी मेडिटेट करना है तो मुझे फ्रेशन अप होना है, उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट लेके पढ़ने बैठना है. सो it avoids the anxiety in you. ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है. आप बच्चों को सबको करना चाहिए थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज. अगर आप डेली करोगे उठ के लिटिल बिट ऑफ 5 minutes एक्सरसाइज, इफ यू डू जंप और समथिंग लाइक दिस, सो इट विल एनर्जाइज यू, राइट? इट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर. आपका एक स्ट्रक्चर प्लान कर देता है, पूरे दिन का स्ट्रक्चर्ड है. आपको पता है कि मुझे पूरे दिन को कैसे ऑर्गेनाइज करके चलना है, कि अगर मैंने इसको मिस किया तो मेरा ये चीज मिस हो जाएगी. इट कीप्स योर बॉडी हेल्दी. आप अगर
राइट टाइम सो रहे हो, राइट टाइम उठ रहे हो, राइट टाइम खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, देन इट हेल्प्स यू टू रिमेन हेल्दी टू. नाउ वन थिंग व्हाट यू नीड टू अवॉइड इज प्रोक्रेस्टिनेशन. ये बहुत ही ज्यादा आजकल के बच्चों में हो रहा है. आप किसी भी बच्चे से बोलो ये कर लो, हाँ कर लूंगा, ऑलवेज हाँ कर लूंगी, अरे अभी तो हाँ ये भी करती हूँ अभी. सो दे आर ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेटिंग, थिंकिंग दैट दे हैव एम्पल टाइम टू डू इट. ओके, सो दैट्स अ रीजन दैट आपका क्या होती है, चीजें पेंडिंग होती चली जाती हैं. यू कीप ऑन पाइलिंग अप, और लास्ट मोमेंट, लास्ट डे आप क्या सोचोगे, आप जैसे सुबह उठे, आपने कहा यार अभी तो टाइम है, अभी कर लूंगा, अभी दोपहर में कर लूंगा, फिर शाम को कर लूंगा, पता चला रात आ गई, आपको सोना नींद आने लग गई, पता चला आपका आधा काम पेंडिंग रह गया. So how you need to prioritize, what are the tips to avoid the procrastination? That's you need to prioritize. अपनी चीजों का अगर आपने prioritize कर लिया कि आज तो मुझे हर हालत में चाहे कुछ हो जाए ये करना ही है, फिर उसके हिसाब से टाइम मैनेज कि मैं 2 घंटा ये पढ़ूंगा, 2 घंटा मैं ये करूंगा, 1 घंटा मैं ये करूंगा, 5 मिनट के ब्रेक्स लूंगा, ठीक है, 45 मिनट्स बिल्कुल बिगर उठे पढ़ाई करूंगा. शेड्यूल कर लोगे कि आज इस दिन इस तारीख को मैं ये पढ़ूंगा या इस तारीख तक मैं ये कंप्लीट कर लूंगा, एंड अपने सेट गोल्स को सेट कर लेते हो, तो यू कैन अवॉइड द प्रोक्रेस्टिनेशन बिकॉज नाउ यू आर वेरी मच फोकस्ड एंड यू आर शेड्यूल्ड, यू आर ऑर्गेनाइज्ड, यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम टाइम को जब भी मैनेज कर सकते हैं ना, ऐसा होता है ना कि कई बच्चे हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, तो वो चाह के भी उनको पढ़ने का मन है बट वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं. तो द रीजन इज देयर हैबिट्स आर नॉट हेल्दी. वो कुछ भी जंक फूड कर रहे हैं, कभी आज बहुत ज्यादा पिज्जा या बर्गर या फास्ट फूड खा लिया तो आज पेट दुख रहा है, या फिर वॉमिट हो रही है, या फिर बहुत एंजाइटी हो रही है, ज्यादा शुगर इनटेक हो गया है, या बहुत ज्यादा खा लिया एंजाइटी में, या बहुत कम खा लिया है. सो ऑल दिस leads to the distraction. All these leads to the affects your immunity. So maintain the healthy mind and body. What you have to do is, आप सुबह उठते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठो. आप 5 मिनट अपने आप को खुली हवा में, अगर आपका टेरेस है या फिर बाहर एक वॉक पे चले जाओ. नहीं वॉक करना है तो आप घर में थोड़ी सी 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लो, आंख बंद करके बैठ जाओ. देयर इज नो नीड कि आपको कॉन्सेंट्रेट होना है, मेडिटेट करना है, अरे बहुत बड़ा चीज हो गया. मेडिटेट इज नथिंग, बट यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिट एंड इंट्रोस्पेक्ट कि आज मुझे अपने दिन को कैसे प्लान करना है. मेंटेनिंग हेल्दी माइंड एंड बॉडी, ईट हेल्दी फूड. हेल्दी फूड में मतलब होता है कि आपको जितना आपकी कैपेसिटी है खाने की उतना है, ना तो एकदम से कम कर दो, ना ही एकदम से ज्यादा खाने लग जाओ. इफ यू आर ईटिंग, अगर आपको मालूम है कि मुझे 1 घंटे बाद पढ़ना है, तो जस्ट मेक अ पॉइंट कि आप जब पढ़ रहे हो उसके 1 घंटे पहले खाना खा लो, ठीक है. नहीं तो फिर आपको नींद आएगी, या फिर आप एकदम खाना खा के बैठोगे तो आपको एसिडिटी या इस टाइप से अनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है. गेट अ क्वालिटी स्लीप. क्वालिटी स्लीप मीन्स सबके लिए 6 to 7 hours या 7 to 8 hours. एक्चुअली 6 to 7 hours हमें जब हमारा पीक टाइम होता है या हमारा बोर्ड्स हैं, तो हम 6 to 7 hours की अगर हम नींद लेते हैं, 6 hours भी ले लेते हैं, तो हम बहुत सफिशिएंट नींद है. वो क्वालिटी हमको स्लीप लेना बहुत जरूरी है. ओके, अदरवाइज आवर ब्रेन विल नॉट वर्क एक्चुअली एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड. स्टडी हैबिट्स के लिए आपको क्या करना है, मीन्स कैसे अपनी स्टडी हैबिट्स को करना है. सो फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टडी. आपको जब पढ़ने बैठना है, आप अभी से ही अपना एक घर का कॉर्नर बना लो, ठीक है. सबको पता होना चाहिए कि वो कॉर्नर आपका, नोबडी इज गोइंग टू यूटिलाइज इट. जब आप ही वहां पे बैठ के पढ़ोगे और वहां पे कोई आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन. जब आप पढ़ रहे हो, टेबल को बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वहां पे कोई फोन, कोई वीडियो या इस टाइप से कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे. जैसे फिटसेट होते हैं वो सब भी नहीं होने चाहिए कि आप पता चला उसमें कुछ खेले जा रहे हो या कुछ गेम्स पड़े हुए हैं. नथिंग टू बी देयर. टेक ब्रेक्स. अपना जब भी आप शेड्यूल करो, जस्ट मेक अ पॉइंट कि 45 मिनट्स का वन गो में आपको पढ़ लिया अगर आपने, तो आपका 5 मिनट्स का ब्रेक जरूर होना चाहिए. बट थिंग इज दैट अब वो 5 मिनट्स का ब्रेक 5 मिनट्स का ही रहना चाहिए. ऐसा नहीं हो वो हाफ एन आवर का हो गया, ठीक है. 5 मिनट्स में आपको गेट बैक करना है. आप अपना म्यूजिक या कोई ड्राइंग या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है उस टाइम पे आप कर सकते हो 5 मिनट्स में. स्पेस आउट योर स्टडी. अपना एक पेस बनाना है कि मैंने आज अपनी स्टडीज को ऐसे ही कंप्लीट करना है. सेट स्टडी गोल्स फॉर ईच सेशन. आज अगर आप कुछ सपोज 45 मिनट्स का एक सेशन आपने अपने प्लान किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस 45 मिनट्स में मुझे क्या क्या कवर करना है. अगर मैं ये सब्जेक्ट लेके बैठा हूं तो इस 45 मिनट्स में मुझे क्या क्या पढ़ना है. ऐसा नहीं बस मैंने उठा के बुक पढ़ लिया और हो गया 45 मिनट्स हो गए. क्या पढ़ा मैंने उस बुक में, क्या उस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा, उसके नोट्स हैं कि नहीं है, उसको कुछ हाईलाइट किया कि नहीं किया, कीवर्ड्स को मार्क किया कि नहीं करा. अगर मैं दोबारा उसको करूँ तो मेरे को वापस पूरा रीड तो नहीं करना पड़ेगा, मैं कीवर्ड्स पढ़ लूंगा तो हो जाएगा. या फिर मैं इस नोट्स को जस्ट
बस रिवाइज कर लूंगा तो हो जाएगा। तो यू नीड टू कि आप क्या कर रहे हो उस 45 मिनट्स में, जस्ट एक बुक को पढ़ के रख दे रहे हो या फिर उस टॉपिक को सॉलिड अपना उसमें कॉन्क्रीट वे में तैयार कर रहे हो। रिवॉर्ड योरसेल्फ, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है, डेफिनेटली रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप 5 मिनट्स लो, अपना अच्छा मनपसंद गाना सुनो, मनपसंद कुछ भी काम करो, मनपसंद कुछ भी आपको खाना है तो वो खा लो। लाइक दिस यू नीड टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। स्टडी स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजीज होती है जिसको बोला जाता है सर्वे, क्वेश्चंस, रीड, रिसाइट, रिव्यू। तो सर्वे, वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर यू आर डू द सर्वे कि कैसे एग्जाम्स के पैटर्न्स होते हैं, क्या पेपर में आता है ना। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखो, कितना एमसीक्यू का वेटेज रहता है, कितना लॉन्ग आंसर्स का क्वेश्चन रहता है, कितना शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन रहता है, क्या पैटर्न रहता है। यू नीड टू सर्वे, क्वेश्चंस को माइन्यूटली आंसर करो कि इस अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे कैसे उसमें आंसर्स लिखना है। अगर मैं 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ, अगर ऐसा तो नहीं है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैंने सिर्फ 2 लाइन में उसको कंप्लीट कर दिया, या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन है और मैंने उसमें पूरा 2 पेज खत्म कर दिया। सो यू आर जस्ट कंज्यूमिंग द टाइम। तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द क्वेश्चंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे एंड आज, जैसे आज अपने एक टॉपिक पढ़ा तो आप उसमें से कितने क्वेश्चंस बना सकते हो, अपने आप उसमें से क्वेश्चंस बनाओ कि अगर ये टॉपिक को इस वे में पूछा तो मैं क्या आंसर दूंगा, अगर इस वे में पूछा तो मैं क्या आंसर दूंगा। लाइक दिस यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज। रीड, यू हैव टू रीड व्हाट। आप अगर पेपर भी पढ़ रहे हो, सपोज ये पेपर का भी है कि जब आपका पेपर आपके सामने है तो यू नीड टू रीड इट वेरी थरली। द रीडिंग टाइम टू बी गिवन टू द रीडिंग सो दैट यू कैन एनालाइज विच क्वेश्चंस you can attempt in one first go or which questions you want to just circle and क्योंकि उसमें थोड़ा सा confusion है तो आप उसको बाद में करोगे। For that you need to read the paper thoroughly. You need to understand. कई बार ऐसा होता है हम superficially पढ़ लेते हैं और जब हमने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा होता है और हम उसका आंसर कुछ और लिखाते हैं, राइट। तो you need to be very specific कि क्या क्वेश्चन है और मुझे क्या आंसर देना है। In the same way when you are planning, जब आप पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, तो आपको क्वेश्चंस को रीड करके उसको सही तरीके से समझ के उसका आंसर देना है कि उसमें कितना आना चाहिए। रिसाइट, आपने जो भी पढ़ा है, ये अभी आपने जो पढ़ा है उसको आपको लाउडली बोलना है। व्हेन यू आर सेइंग लाउडली, यू आर एक्चुअली सेंडिंग द मैसेज, यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, एंड रिव्यू, तो पूरा जो रिव्यू है आपको रिव्यू करना है कि मैंने आज जो ये पढ़ा क्या मुझे समझ में आया। You need to understand, you need to write somewhere in the pointers or the keywords. So you are reviewing it कि आज जो मैंने पढ़ा पूरा क्या मैंने उसको अच्छे से समझा कि नहीं समझा। So you will also be getting an idea कि आज मैंने ये पढ़ा मुझे अच्छे से समझ में आ गया। Reminders for myself to be, again, this is a recapitulation. You need to, I will be very specific to my goals. These are the promises to yourself which you are going to do. I will measure my success by creating practical milestones. I will ensure my milestones and goals are achievable. And I will work on my goals that are relevant and aligned with my values and core beliefs. So values here that you need to be honest. Nobody is watching you, right? आपने अगर घर में बोल दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ तो सब लोग सोचते हैं हाँ पढ़ रहा है। अब आप पढ़ने के टाइम पे आप क्या कर रहे हो वो तो आप ही को पता है। तो your values, your core beliefs, that should be means like you need to be very honest with your studies. I will set a workable timeline so that I know when to check इन विथ माई सेल्फ। अगर आपने शेड्यूल बना लिया है और आपका वो टारगेट कंप्लीट हो गया है, जब आपने रिव्यू किया या आपने अपने आप को, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे। अगर वो आप नहीं कर पाए हो टू डू लिस्ट को, सो देयर इज नथिंग हार्म, एटलीस्ट यू रिवॉर्ड योरसेल्फ कि मैंने 6 में से 4 कर लिए, ये 2 को मैं कल हर हालत में कंप्लीट करूंगा। एंड दीज 2 विल बी द मीन्स द प्लस, आई हैव टू कंप्लीट दिस अलॉन्ग विद द नेक्स्ट डे टारगेट, राइट। Now career, so here I have completed that how you can strategize. Anybody wants to ask anything over here, you can definitely ask. Otherwise, though I am telling you these career options, but it is only just, I'm just making you aware, right? It is not an intention right now कि आपको ये careers पे ज़्यादा focus करना है, अभी आपको अपने exams पे focus करना है. But yes, you need to also aware about कि क्या-क्या careers होते हैं और आप किस-किस उसमें जा सकते हो. आपका अगर 12th का होता है तो ये क्योंकि ये 12th का काउंसलिंग है तो you need to be aware also कि ये चीजें होती हैं. Anybody wants to ask anything? Otherwise, I'll proceed. Okay, so STEM careers opportunities. STEM सबको पता है कि like sciences, technology, engineering, maths, तो ये सारे जो हमारे होते हैं ये हमारे sciences वाले सब्जेक्ट हैं. तो जिसमें आप क्या-क्या इसमें आप careers कर सकते हो, क्या-क्या आप बन सकते हो. तो you can be statisticians,
You can be a web developer, you can be a big data, data analytic and data science. You can do the artificial intelligence and machine learning. You can be a robotics engineer, you can be a aerospace, food, agriculture science. With PCM, PCB, you can go for bioengineering and biomedical engineering. Again, this is combined with a PCMB, means that both bio and maths is required for this. Sports medicine, nautical science, investment banking, international marketing management, and aviation management. So STEM's career opportunities here when the with the PCM particularly. So you can go for the aeronautical sciences, aerospace, aviation, forensic, nautical science, physics, chemistry, nanochemistry, and industrial design. I'm not going into these careers right now because it will be right now. This is not the time. I'm just making you aware about this career. If you want to know more about it, you can definitely register yourself on the Myedubag website, and you can enroll yourself and register yourself for the further inquiry. STEM careers opportunities for PCB, MBBS, BDS. You can go for the veterinary, occupational, psychotherapy, environmental management, BTech, biotechnology, bioinformatics, viticulture, naturopathy, Ayurvedic, Unani medicines, and multiple specializations are there. And even you can go for the microbiology and biotechnology. So these are the benefits of the PCM, PCB. Like after later on also, they can change their career after 12. They can go for the commerce, they can go for the humanities, or they can stick to their own ways and there are many diploma courses also. Those who don't want to go for the particularly for MBBS and all, so they can go for the yoga, nursing, psychotherapy. They can go for the environmental sciences, elementary education. So these are the small diploma courses of 1 year or 6 months. Agriculture, fashion communication, digital marketing. Even the career options for the medical field means like where you don't want to see the conventional kind of medical fields, but you want to go in other fields, taking the PCB. So you can go for agriculture, microbiology, botany, zoology, environmental science, genetics, bioinformatics, pharmacy, marine biology, and biotechnology. And here in the commerce, those are students, those who are in commerce, for them, they can go for economics. Actuarial sciences is nowadays very much prevalent. It is just like a CA, management, commerce, chartered accountancy, statistics, company secretary, ACCA. Again, it's Europe. It is ACCA has been recognized. Okay, now in India also it has been recognized. Cost and management accounting, stockbroking, entrepreneurship, and mass communication and journalism. Humanities, if I talk about the gender strategies and women studies, habitat policy, where you plan for the urban and rural plannings, okay, museology, cartography, genderology, rural studies and development, psychology, history, archaeology, political science, international relation, hotel management, hospitality, mass communication, economics, design, foreign language, and sociology. So here, I just want to tell you, life is about balance, doing a job at the right time, take a rest at the right time. So if you are able to balance between both, then you